It's a damped harmonic motion. डैम्पिंग, भाई कोई भी ऑसिलेशन आप देखोगे ऐसे ऑसिलेट कर रहा नॉर्मली, भाई अनडैम्प्ड एक होता है अनडैम्प्ड, जो आमतौर पे जो अभी तक हमने पढ़ा था टेम्पर्ड, और जो सभी कैसा है, अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है। और अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में इसके टाइम पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, इसके एम्पलीट्यूड भी बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। कैसा भी, बिल्कुल फिक्स्ड। एम्पलीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा भाई, बिल्कुल अभी देखा है स्ट्रेट लाइन। एम्पलीट्यूड एक स्मॉल एम्पलीट्यूड स्ट्रेट लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द अनडैम्प्ड, इज द अनडैम्प्ड simple harmonic motion. Amplitude is small and path is a straight line. Path is a straight line. Time period t constant. Time period t constant. Amplitude constant. Small and constant. Small and constant. क्या होता है भाई अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में? एम्पलीट्यूड स्मॉल तो है ही, कांस्टेंट है, ऑलवेज सेम, हमेशा बार बार यहां से यहां तक ऐसे एग्जीक्यूट अपने मोशन को, बस इसी पाथ पे एग्जीक्यूट करते रहेंगे हमेशा के लिए, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे भाई, क्या करना होगा, इसको डस्ट फ्री, किसी फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। We have to enclose this inside the glass, है ना, so that इसमें से वैक्यूम चैम्बर में, you can do the vacuum chamber। जब भी कोई एयर होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें डैम्पिंग करेंगे, तो हमें एक वैक्यूम चैम्बर करने से ग्रेविटी रहता है, ओनली एयर विल बी आउटसाइड, एयर नहीं रहेंगे उसमें, ग्रेविटी रहेंगे, बाकी सब कुछ रहेंगे। तो ग्रेविटी हटा देना है यहाँ से, तो ग्रेविटी रहना है और वैक्यूम चैम्बर करना है, तब ऐसे अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन मिलेंगे। But what will happen in the damped harmonic motion? Our topic is damped harmonic motion. Damped harmonic motion में भी there should be some changes. Now let's talk about the damped harmonic motion. Yes, the oscillation, पहले इसकी एम्पलीट्यूड इतना बड़ा था, now एम्पलीट्यूड छोटा और स्मॉल, and gradually this is simply the sign of amplitude, है ना, अलग अलग टाइम पे। तो धीमे धीमे इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है भाई, रिड्यूस करते जा रहा है, रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड, slowing down, amplitude is reducing, amplitude कम होते जा रहा है, amplitude is reducing। पहले a नॉट है, सपोज इनिशियली द एम्पलीट्यूड इज a नॉट, एम्पलीट्यूड क्या भाई a नॉट, धीमे धीमे इसके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके एम्पलीट्यूड a हो जाता है। This is the damped harmonic motion. Damped harmonic motion. Oh, you cannot say the damped simple harmonic. You cannot use the word simple here. You cannot use the word simple. It is not the simple harmonic motion now. It is simply the harmonic motion. It is the undamped simple harmonic motion. But there is a damped harmonic motion. There is a damped harmonic motion. अभी सिंपल नहीं रहा, सिंपल तभी रहते हैं जब सब कुछ एक जैसे रहते हैं, है ना। It's not the simple. Okay. So damped harmonic one, though the amplitude is variation. There is a variable amplitude, है ना. There is a variation of amplitude. Variation in amplitude.
विथ टाइम के साथ इसके एम्पलीट्यूड चेंज करते जा रहा है। यू कैन सी कैसे चेंज कर जाता है। इट्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। when time t is equal to 0, the amplitude is a naught, and after any time t, sometime t, यहाँ पे at time t is equal to 0, amplitude is a naught, at time t is equal to t, amplitude is again a naught. Amplitude is constant here, but there is variable amplitude. How it is varying? It's a exponential varying. कैसा vary होता है? Exponential. The variation in amplitude with time is exponentially वेरिएशन हो रहा है। और कैसे? माइनस bt अपॉन 2m, the variation of amplitude is this way. B is some constant, B is constant. Okay. So this is the exponential variation. The amplitude is decreasing every time. The amplitude is decreasing with time. This is one of the important relation. Amplitude in constant, there is a constant amplitude, but in damped harmonic motion, there is a variable amplitude. Okay. When undamped harmonic motion, what was the force? Okay, force is equal to minus kx, or you can also say minus k means m omega naught square, omega naught initial angular frequency पहले से रख लिया. What is the angular frequency of it? A naught रख लेते हैं initial वाले के लिए. Omega naught, we can say it is a natural. Now we have to comparison. We have two types of cases. One is undamped, other is the damping. So undamped वाले हम natural terms का इस्तेमाल करेंगे. It is a natural angular frequency. So it is a natural angular frequency. Okay. So m omega naught square x. Omega naught square. This is the f net. This is the f net. कब? In this situation, in undamped situation. But now, in this damped situation, what could be the f net for damped harmonic motion? Of course, we have f net is equal to, जो पहले से जो फोर्स लग रहे थे वो तो है ही हमारे पास. Now there is one additional force. एक additional force हमारे पास है भाई. क्या force है additional force? Frictional force, damping force. Frictional force, damping force. Make the note. Oh, friction force by the air, by the atmosphere. That is also the friction. Because of the air friction, it's we have the different types of friction. कोई सरफेस के, कोई सूज में लगते हैं, कोई हवा में लगते हैं, कोई आप चलते हो, बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे लगते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द एयर, जिसकी वजह से आपके जो क्लॉथ्स है, आपके जो हेयर है, वो पीछे की तरफ मूव करता है. Okay. Okay. So there is a force of friction. Force of friction is what? Force of friction is opposite to the velocity. Opposite to, अगर बॉडी इधर जा रहा है, force of friction is this way. बॉडी इधर जा रहा है, force of friction is this way. आप आगे जा रहे हो, force of friction is relative velocity, of course. Okay. तो यहाँ पे एक दो तरह के फोर्स आने वाला है. एक फोर्स लगने वाला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें डैम्पिंग फोर्स. व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स हियर? तो एफ नेट इज इक्वल टू, एक तो आ रहा है पहले वाला माइनस के एक्स जो पहले था यहाँ पे, वो तो है ही. साथ में we have to apply one another force, and that is the damped force. कौन सा फोर्स? F damped.
damped force, damped. This force, you have to add it, this force. Add karna, okay, you have to add it, damped force. And what about the damped force? हम इस damped force को कैसे indicate करते हैं? So it is something constant opposite. Direction is opposite to the velocity v and some constant b. There is some b. B means there is a constant. B कहाँ से आया? For frictional force से आया. B is a constant, comes from the frictional force, है ना? B v some constant. B v constant. So b is a constant. यही b है वो b term. B is a constant. B is a constant. It depends on. जो b किस पे डिपेंड करेगा भाई? वो डिपेंड्स ऑन भाई जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, जो फ्रिक्शन है, जिस भी सराउंडिंग की वजह से है, वो सराउंडिंग की डेंसिटी कितना ज्यादा है, वो जो बॉडी जो इसमें ऑसिलेट कर रहा है कि we are just talking about the b. What this b? B is a constant. B is a constant which depends on. B is a constant which depends on the nature of, depends on the, what you will say, I will say something different. So okay, that's it. I mean just a joke. Okay, which depends on the nature of the body and the surroundings. Nature of the body and surrounding. उसी नेचर में सब कुछ आ गया. कितना डेंस है ना? बॉडी कितना छोटा है, कितना बड़ा है, बॉडी क्या कोई रफ, बॉडी भी कितना रफनेस होता है. कोई कांटे वाले बॉडी आ जाए, ऐसे रफ बॉडी होते हैं ना, कांटे वाले बॉडी. कैक्टस, हाँ बिल्कुल, कैक्टस के फ्रूट्स बोलते हैं उससे, या फ्लावर ही है. ओके ओके. एक 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 फल भी होता है जो शिव जी पे चढ़ते हैं, जो शिव जी को पूजा किया जाता है. नहीं शिव जी जो कांटेदार, जो जो कांटेदार होते हैं, जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं. नहीं, हाँ धतूरा, धतूरा का जो फल होते हैं, धतूरा का जो फल होते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए से जो चाह रहे थे कि was a great book. Okay. मतलब उसी इंडिकेशन की वजह से उन्हें चढ़ाया जाता है कि इससे नशा बनते हैं, और शिव जी को कहा जाता था कि वो नशे करते हैं. ऐसा होता नहीं है, पता नहीं सब कहाँ कहाँ कहानी. हाँ जब शिव जी की पूजा होती है तो भांग भी बनते हैं. बिल्कुल. तो हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अ लाइव क्लास. ओके, नो प्रॉब्लम. I don't know how to edit it. I don't know much time to edit this. Okay. Okay, let it be natural. Okay, just come here. Okay. Sir, nature of the body. Which depends on the nature of the body. Which depends on nature of the body. मैं इस बात को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबको सुनना ही पड़ेगा. Nature of the body means what? वो धतूरे के फल जैसे कहीं कांटेदार बॉडी तो नहीं है इसमें. देन रफनेस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया. देन कम होंगे. तो रफनेस बढ़ गया तो ज्यादा होगा ना. वो कूल डाउन बेबी, कूल डाउन. भाई लेट्स से जब बॉडी की जब साइज कम होंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, है ना. छोटे बॉडी जल्दी ऑसिलेट करेंगे, है ना. जब बड़ा बॉडी होगा तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना. जब स्मूथ सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होंगे. जब रफ सरफेस होगा धतूरे के फल के जैसा, है ना. वी डोंट, इसलिए हमने डिस्कस किया धतूरा वाला टर्म. दैट इज द ग्रेट वर्ड. ओके. तो धतूरे के फल के जैसा अगर रफ बॉडी होगा तो बी की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है ना, कांस्टेंट वैल्यू. सो बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, एंड द सराउंडिंग, एंड द सराउंडिंग, एंड द सराउंडिंग. Okay, got it? Okay.
So also here यहाँ पे लिख लेते हैं हम B/2m has a very specific meaning. It is omega. It is omega. It is omega. It is a damped angular frequency. Angular frequency. It is a damped angular frequency. So this is the F damped and this is the F net. So what were the F net now? अब मैं इस F net वाले टर्म को यहाँ से हटा देता हूँ, इस वाले अनडैम्प्ड वाले पोर्शन को यहाँ से हटा दूं, यस हटा देता हूँ इसको, भाई तुम हट जाओ यहाँ से, यस okay. So what is the F net? What is the F net in damped case, in damped oscillation? किसके लिए भी? Damped oscillation. Damped harmonic motion को आप क्या बोल सकते हो, और भी बोल सकते हो, oscillation या damped harmonic motion में F net की वैल्यू क्या हो रहा है भाई? एक तो पहले वाला है ही आपके पास और साथ में F net damped वाला भी आ गया है, प्लस में तो माइनस बी भी आ चुका है. ओके, तो अगर इस तरह के फॉर्म, अगर इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा v के साथ ना, तो ये भी आता है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन. इसमें कोई बड़े रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं अगर आपके आए तो कम से कम ये तो पूछ सकता है कि भाई which type of oscillation is represented by this F net. किस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है भाई? It is a damped harmonic motion. सिर्फ इतना रहेगा तो which type of oscillation is this? Undamped. This is a simple harmonic motion. It is a simple harmonic motion. Now it is the damped harmonic motion, isn't it? Yes. It is a damped harmonic motion. F net. No. Rocket science बहुत ओके नहीं होते. Rocket science is so simple. But it has been said, rocket science is so simple कि एक बिजनेसमैन ने सोचा कि हमें आसमान में स्पेस में पहुंच जाना है और उसने बना डाला स्पेस एक्स. His name is Elon Musk. Elon Musk is the simple as the businessman person. ऐसे ही क्लास में बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन पर्सन ऐसे कुछ, लेकिन काम करता था, उसको बिजनेस करने आता था. उसने सोचा था कि हाँ जो था होते हैं जिनमें थोड़ी सी माइंड हो और थोड़ी सी इनडिसिप्लिन भी हो तो अच्छा कर लेते हैं लाइफ में, अच्छे अचीव कर लेते हैं. ओके, क्योंकि अचीवमेंट मतलब वो हो जाता है ना, वो पूरी. अगर आप कोई स्लो माइंडेड होता है ना या सिर्फ पढ़ने मन लगा तो वो सिर्फ पढ़ते ही रह जाएगा बस. It is simply a proverb. It's simply a proverb. It's not a rocket science. Means it is not a difficult thing. Okay. It's simply a proverb. Okay. So what हमने क्या देखा भाई? इस डैम्पिंग की वजह से जो इसकी जो ऑसिलेशन है वो धीमे धीमे सीज होने लगा. जो इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो धीमे धीमे रिड्यूस करने लगा. कैसा रिड्यूसिंग कर रहा है? एक्सपोनेंशियली रिड्यूस कर रहा है. इट्स एक्सपोनेंशियल कर्व है ना. कैसा कर्व भाई? एक्सपोनेंशियली रिड्यूसिंग. एक्सपोनेंशियल reducing amplitude. ऐसे हो रहा है ना. यू कैन से ऐसे धीमे धीमे जो इसकी एम्पलीट्यूड था, जो पहले एम्पलीट्यूड एक लार्ज एम्पलीट्यूड था, ऐसे वी कैन जस्ट ड्रॉ इट. जस्ट टेक इंडिकेटिव डायग्राम. The amplitude is slowing down. The amplitude is slowing down, decreasing down, and the oscillation is slowing down. Amplitude is decreasing and oscillation is slowing down. Yes, this way. ऐसे होते हैं, इसे बोलते हैं damped harmonic motion. Got it clear? Okay. Okay. So what could be the, जैसे इक्वेशन होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का,
Now what about the equation? हाँ वो तो है, again equation of position. Now equation of the position of the oscillating particle. Number A, for undamped simple harmonic motion. Okay, क्या होता है भाई? X is equal to A naught sin omega naught t. Can we write it? ऐसे हो सकता है ना? Yes. Then for damped harmonic motion, the equation can be represented as A naught नहीं होगा, there is something A variable depends on time. A t time dependent आ गया, it is time dependent, and sine, and we have another omega t something del, you can say, where at is what? At is, this is at time dependent amplitude at here, time, that is A naught exponential minus bt upon 2m. याद रहता है ना ये term, b upon 2m is angular frequency. Okay, तो ये पूरा at के ऊपर पूरा आ गया, and then you can write the sine. No, omega naught नहीं है यहाँ पे, अब different angular frequencies का आ गया, omega naught, omega t and plus something del, कुछ ऐसा जाने. हाँ बिल्कुल रख सकते हैं. Excuse me, sir. ऐसे हो जाते हैं. Now the equation becomes like this. So this could be asked to you, what about this equation? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डैम्प्ड हार्मोनिक. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है? ओके, सो डैम्पिंग हो गया आपका. ओके ओके, चैप्टर खत्म. और इस डैम्पिंग को हम ओवरकम भी कर सकते हैं. इस डैम्पिंग को हम ओवरकम भी कर सकते हैं. जितने फोर्स से डैम्पिंग हो रहा है उतना ही फोर्स लगा देंगे, उसको बोलेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन. क्या बोलेंगे उसको? मेक द पॉइंट. द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, the damped harmonic motion can be converted into the simple harmonic motion. The damped harmonic motion can be converted into the simple harmonic motion by applying a harmonic force. Can be converted into simple harmonic motion by applying a harmonic force F. Harmonic force F is equal to F naught sine omega t, omega dash t. अब इसका एक हार्मोनिक मोशन आ गया, ओमेगा डैश. हमारे पास ओमेगा नॉट, ओमेगा और फिर अब आएगा हमारे पास आ गया ओमेगा डैश. Here omega dash is the angular frequency of the forced oscillator. Angular frequency of the force oscillator. फोर्स ऑसिलेटर का मतलब क्या है? वो जो एक फोर्स लगाने वाला हो ना, कोई फोर्स लगाएगा ना, उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के फोर्स लगाना पड़ेगा. एक वैल्यू फोर्स है, एक हार्मोनिक फोर्स है. दिस इज द हार्मोनिक फोर्स. बदल रहा है, फोर्स की वैल्यू बदल रहा है, और such type of oscillation is called forced oscillation. क्या बोलेंगे उसको? Forced oscillation. Then the oscillation becomes forced oscillation. Then oscillation becomes forced oscillation. So what is the F need?
इन फोर्स्ड ऑसिलेशन अभी भी पहचानने में आएगा which type of the force is this, कौन सा, एक पहले वाला क्या है, kx नॉट, kx, फिर क्या आ गया माइनस बी भी, अब क्या हो गया एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी, ये भी आ गया। ओके, which type of force is this, which type of oscillation is this, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन वी राइट दिस वे, ओके, ये माइनस ए, किसको रिप्रेजेंट, इट्स अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, किसको बता रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशन को बता रहा है। यहाँ पे पहले के जगह पे क्या है माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, फिर एक्स, बी मींस देयर इज अ बी वी, और फिर यहाँ पे है एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी, दिस इज द एफ नेट मींस व्हाट, m into dv upon dt, m into dv upon dt, acceleration, m into dv upon dt is the acceleration, yes. Got it? So this is, yes, this is the forced oscillation, this is the forced oscillation, हम इसे बोलते हैं forced oscillation. हाँ, it's the force, it's a forced oscillation. चलो लास्ट में लिखो एनपीवी रिडक्शन, फिर से करते हैं। ओके, तो हमें टाइम मतलब जो पीछे बैठे